Starting with problem 15-79, you have a particle which is this ball traveling at a speed of 10 meters per second towards the right as shown to you in the figure. Then you have another particle which is this block B, and it is traveling down the incline with a speed of 1 meter per second. The ball strikes this 6 kg block as it is traveling down the incline. If the coefficient of restitution between the ball and the block is 0.6, you need to determine the speeds of the ball and the block just after impact. Also, what distance does B slide up the plane before it stops? The coefficient of friction between the block and the plane is given to you as 0.4. So at the time of collision, अगर हम सिचुएशन देखें तो आपके पास सिचुएशन क्या होगी कि ये आपके पास वो ब्लॉक है एंड दिस इज द बॉल विच इज स्ट्राइकिंग दिस ब्लॉक. सो एट द टाइम ऑफ कोलिजन द लाइन ऑफ इम्पैक्ट की अगर हम बात करें, सो दैट लाइन ऑफ इम्पैक्ट इज गोइंग टू बी दिस लाइन विच इज शोन टू यू बाय द ब्लू लाइन. सो दिस इज गोइंग टू बी द लाइन ऑफ इम्पैक्ट जिसको मैं LOI से रिप्रेजेंट करता हूँ, वेयर एज द प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट इज गोइंग टू बी दिस लाइन विच इज बीइंग शोन टू यू विद द yellow line. So these are the two axes which are going to be used for analysis of oblique impact. One is the line of impact which is shown to you with the blue line. Line of impact कैसे आपको मिलती है? At the time of collision आप दोनों particles के mass centers को join करते हैं तो you are going to get the line of impact. Plane of contact क्या होता है? It is the line which is being defined perpendicular to the line of impact at the time of collision. So ये line of impact और plane of contact आपने define कर दिया. Particle A was traveling with a speed of 10 meters per second at an angle of 20 degrees with respect to the line of impact, whereas particle B was traveling with a speed of 1 meter per second along the line of impact. So first of all, is it a case of central impact or oblique impact? Oblique impact. Oblique impact. Why it is oblique impact? Because although particle B was traveling along the line of impact, but particle A was traveling at an angle of 20 degrees with respect to the line of impact. तो oblique impact हम define किस तरह करते हैं कि अगर एक या दोनों particles line of impact से किसी angle पे travel कर रहे हो before collision, तो then that type of collision is termed as oblique impact. तो यहाँ particle A जो है वो एंगल पे ट्रेवल कर रहा है बिफोर कोलिजन लाइन ऑफ इम्पैक्ट से, तो इसलिए हमारे पास ऑब्लीक इम्पैक्ट हो गई है. सो इफ इट इज अ केस ऑफ ऑब्लीक इम्पैक्ट, देन वी नीड टू अप्लाई द प्रोसेस ऑफ ऑब्लीक इम्पैक्ट फॉर द एनालिसिस ऑफ दिस प्रॉब्लम. सो इन स्टेप नंबर 1, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल on the system along the line of impact. What is the initial momentum of particle A along the line of impact? Uh, 2 into 10 cos 20. So the line of impact आपकी define हो रही है, which is this particular line, and we are taking the positive axis up the incline. So the initial momentum of particle A is 2 into 10 cos of 20. Positive, negative? Positive. Positive होगा. So 2 into 10 cos 20 is going to be the impact, is going to be the momentum of particle A along the line of impact. What about particle B's momentum? Minus 6 into 1. Okay, minus 6 into 1 या 6 into minus 1, whichever way आप इसको लिखना चाहें. So this is going to be the momentum of particle B before impact, and the right side of this equation says that MAVA2, which is 2VAX2 plus 6VBX2. So this would be your equation number 1 in terms of VAX2 and VBX2, which you have found by applying the conservation of momentum principle along the line of impact. I hope कि जो मैं लिख रहा होता हूँ वो visible है आप लोगों को, ये equation number 1. Yes, sir, visible. Okay, now in step number 2, what we are going to do is we are going to apply the coefficient of restitution equation along the line of impact. The coefficient of restitution for this collision is given to you as 0.6. So 0.6 should be equal to VBX2. So VBX2 minus VAX2 divided by VAX1, which is 10 cos of 20
-1. So this is going to be our equation number 2, which is being written for coefficient of restitution along the line of impact. Now the important thing here to note is कि अक्सर लोग, जैसे मैंने कल भी जिक्र किया था, अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ गड़बड़ कर देते हैं. ओरिजिनल फार्मूला में देयर इज ऑलरेडी अ नेगेटिव साइन, एंड सिंस द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी बिफोर इम्पैक्ट इज टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट, सो आपने वो -1 जो है वो डालना है, माइनस का साइन वहां भी डालना है. सो दिस माइनस माइनस इज गोइंग टू बी taken as positive. So you have got two equations. Unknowns भी आपके पास दो ही हैं इन equations में. So once you solve these two equations, the unknowns would comes out to be VAX2 would comes out to be minus 3.079 meters per second, whereas VBX2 would comes out to be 3.159 meters per second. So these are the velocities of these particles A and B just after impact, the x component or the component of these velocities along the line of impact, because line of impact को हम generally x axis कहते हैं और plane of contact को हम generally y axis से represent कर रहे होते हैं. यहाँ तक clear है रेक को? Yes, sir. Okay, what should be our step number 3? Velocity after collision along y-axis. Okay, so in order to find out the velocity after collision for y-axis, हम करते क्या हैं कि हम individual particle A और B को consider करते हैं. Since there is no impulse acting on any of these particles along the plane of contact, so the momentum of the system would remain same. Momentum of the particle would remain same along the plane of contact. So applying the principle of impulse and momentum on particle A and B along the plane of contact, VA_y2 should be equal to VA_y1, and what is that V? That is going to be equal to 10 sin 20, isn't it? Yes, sir. Negative. But with a negative sign. So 10 sin 20 with a negative sign, it will give you the value of minus 3.42 meters per second. What about VBY2? 0. Why 0? So no component along. That's correct. So since before collision, particle B was traveling along the line of impact, so after collision, it would travel back along the line of impact only. आपके पास particle B का जो है वो plane of contact के along कोई component नहीं आएगा. Okay, if we take a look at if we take a closer look at the components of VA, that is VAX2 and VBY2, VAX2 and VAY2, दोनों components negative आए, isn't it? Yes, sir. Okay, अगर दोनों components negative आए, it means के किस quadrant में ये VA2 lie करेगा? The third quadrant. It means that it is going to lie in the third quadrant. So अगर मैं impact की बात करूं और मैं थोड़ी सी खाली जगह देख रहा हूं. Okay, अगर मैं impact की बात करूं, so आपके पास ये वो एक्सिस थी, इंक्लाइन वाली एक्सिस, ये आपके पास वो पार्टिकल B था और ये आपके पास पार्टिकल A है एट द टाइम ऑफ कोलिजन. सो आफ्टर कोलिजन जो आपके एक्सिस बन रहे थे, दोज एक्सिस वर, दिस वाज द line of impact and this was the plane of contact. So it means के VA2 is in third quadrant. It means कि वो किस तरफ मूव करेगा, वो इस डायरेक्शन में जो है वो मूव करेगा. मूव करके वो कहाँ किस चीज से टकराएगा? प्लेन से. वो इंक्लाइन प्लेन से टकराएगा. तो अगर मैं आपको इस इंक्लाइन प्लेन का ई दे दूं, यानी अगर मैं फर्दर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि इसी में इस इंक्लाइन प्लेन का ई दे दूं, तो यू कैन फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल ए आफ्टर कोलिजन विद द इंक्लाइन प्लेन. कर सकते हैं? Yes, sir. So वो भी सेंट्रल इंपैक्ट होगा, ऑब्लिक इंपैक्ट होगा? सर वो ऑब्लिक होगा क्योंकि वो एंगल पे उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ना सर. That's correct. So it is also a case of oblique impact. और उसके बाद हो सकता है यहाँ से प्रोजेक्टाइल बना के आगे की तरफ जा रहा हो और आप जो है वो आपसे कहा जाए कि प्रोजेक्टाइल कितनी दूर जाके हिट करता है, वो फिर प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन भी आप अप्लाई कर सकते हैं. ओके, सो पार्टिकल ए तो जो है वो इस तरह रिबाउंड हो जाएगा. व्हाट अबाउट पार्टिकल बी? सर उसकी ओ डिसेलेक्ट हुआ है, वेलोसिटी उसकी डिक्रीज हो गई है. पार्टिकल बी जो है वो रिबाउंड होगा
और वो इस डायरेक्शन में जो है वो मूव करेगा, isn't it? Yes, sir. Okay, so part 2 पे आ जाएं. You need to find out the distance B slide up the incline before it stops. So how you are going to determine that distance? Any idea? सर फ्रैक्शन है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो यूज नहीं कर सकते, वर्क एनर्जी भी यूज कर सकते हैं. Okay, so चूंकि friction involved है, so in order to find out that distance S, you can not use conservation of energy principle because force of friction is being involved here. So चूंकि force of friction involved है, so it means कि आप principle of work and energy का इस्तेमाल करेंगे. So what is that principle of work and energy? आज का क्विज भी आपका उसी से है, तो एक तरह से चले आपकी रिवीजन भी हो जाएगी. मैं कहता हूँ कोलिजन के बाद ये डिस्टेंस s तक मूव करेगी, तो अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी, दैट प्रिंसिपल सेज दैट द initial energy, kinetic energy of block B after collision plus sum of work done by all the forces in moving this block B from position 2 to position 3 should be equal to the final kinetic energy of the block, isn't it? यही है principle of work and energy. Yes, sir. Okay, what is the initial kinetic energy? It is half m 3.159 जो कि आपकी वेलोसिटी आई थी कोलिजन के बाद वाली, उसको आप स्क्वायर कर लेंगे. व्हाट अबाउट T3? जीरो सर, क्योंकि लेफ्ट जीरो होने. जी, क्योंकि जब ये मैक्सिमम ऊपर जा चुका होगा, it is going to stop momentarily, so T3 should be equal to 0. As far as summation U1 to 2 is concerned, अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाएं कोलिजन के बाद से लेके स्टॉप होने तक, तो कौन सी फोर्सेस इस ब्लॉक के ऊपर एक्ट कर रही हैं? One is the weight, the other one is the normal reaction force, and the third one is force of friction. यही तीन फोर्सेस एक्ट करेंगी इस ब्लॉक पे. Okay, so from these three forces, which of them are going to contribute towards work done? Sir, friction force करेगा, component of weight करेगा. तो UW आपके पास आएगा और UFF आपके पास आएगा. These are the two forces that are contributing towards work done. What is the work done due to weight? Can you identify it from the figure? Yes, sir. Sir, वो y component of weight into S. W into S sin 20? Yes, sir. Positive, negative? Sir, negative क्योंकि ऊपर जा रहे हो, weight नीचे है. So weight is acting downward, the vertical component is upward, so minus W into S sin 20. As far as the friction work is concerned, it is going to be mu NC into S. Positive, negative? Sir, negative. So friction की वजह से भी आपके पास work done जो है वो negative आ जाएगा. How you are going to determine this NC? Sir, equation of motion apply करने along normal axis. Along y-axis, जो कि आपकी perpendicular to the incline है. So NC should be equal to WB कितना? Cos 20 sin 20? Sir, cos 20. So NC is WB cos 20. So in this equation, the only unknown thing here is S. So once you solve it, S would comes out to be 0.708 meters or 708 millimeters आपके पास S आ जाएगा. So I hope that this point is clear to all of you. किसी का कोई query regarding problem 15-79? No query? No, sir. Okay, चले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है. Should that block remain static at that position or is it going to move downward? How you are going to judge it? जी अब्दुल्ला लियाकत, आवाज आ रही है? Yes, sir. एक मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि चलें ब्लॉक को मोमेंटम, ब्लॉक को इम्पल्स या इम्पैक्ट मिला जो स्ट्राइक की वजह से, जिसके नतीजे में उसने 0.708 मीटर्स अप द इंक्लाइन मूव किया. नाउ shall the block would remain stationary at that point or is it going to again move downward? Anyone volunteer जो जवाब देना चाहे? Can you hear me? थोड़ी देर बाद रुक जाएगा. थोड़ी देर बाद रुक जाएगा. नहीं, मेरा तो आपसे सवाल यही है. रुक तो गया वो ऊपर जाने के बाद 0.708 मीटर्स कवर करने के बाद, लेकिन क्या वो वहां रुका रहेगा या नीचे की तरफ आएगा?
सर वो हम निकाल सकते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और वेट का जो कंपोनेंट है उस डायरेक्शन That's में। correct. अगर मैं आपसे कहूं कि कोफिशिएंट कौन सा फ्रिक्शन का, यही कोफिशिएंट यूज करेंगे? स्टैटिक कोफिशिएंट। तो अगर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है और वेट का कंपोनेंट आप निकाल लेंगे जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, इनको कंपेयर कर लेंगे। अगर तो वेट का कंपोनेंट स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा है तो द ब्लॉक इज गोइंग टू मूव डाउनवर्ड। अगर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड वेट के कंपोनेंट से ज्यादा है तो देन द ब्लॉक वुड रिमेन स्टेशनरी एट दैट पॉइंट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। चलें, so with this I hope कि dynamics is clear to all of you. Dynamics के आपने सबसे पहले अगर हम देखें, हमने स्टार्ट किया था काइनेमेटिक्स ऑफ अ पार्टिकल से, उसके बाद फिर हमने काइनेटिक्स ऑफ अ पार्टिकल पे आए और हमने काइनेटिक्स ऑफ अ पार्टिकल के डिफरेंट मेथड्स देखे, जिसमें हमने सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन से स्टार्ट किया, फोर्स एक्सीलरेशन मेथड, देन वी डिस्कस द वर्क एनर्जी मेथड्स, एंड देन फाइनली वी डिस्कस द इम्पल्स एंड मोमेंटम मेथड। सो ये सारी चीजें डिस्कस करने के बाद हमने इसमें इम्पैक्ट एनालिसिस भी देखी। नाउ द डायनामिक्स ऑफ अ पार्टिकल और डायनामिक्स ऑफ अ पार्टिकल, दैट इज काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स, आर बोथ कंप्लीटेड।